Good evening, everybody. Now, this is a new platform which was introduced to me by Dr. Ketan. Now, this is Quantman. This is as good as what Tradetron is, but I will rate it slightly better than Tradetron. And this gives you a lot of facilities. You can backtest whatever you want to do is. Now, before I show you any strategy, I will just show you, because there was the first question which I asked you was, what kind of profit you anticipate when you are doing an option buying? So everybody was saying 10%, 20%, 30% on an annual basis, whatever basis you are saying is. So now let's go and see what it is. So for last 2 or 3 days, I've been doing a lot of things like this. So this is the strategy what we are going to look at. This is, we'll create it first and then I will show you. Actually, it's the profit is very high in this strategy. This profit is, this is for last Bollinger Band is, this is for January 2022 to for last 1 year. This 1 year, starting from 3rd of January 2022 to 28th December, that is yesterday, the profit generated is 55,000 rupees on a capital of 10,000 rupees. Good. It's good, bad, worse. Good, sir. 500%. 500%. So I'm not saying it's 500%. Let's see. I always, whenever I take a strategy, is at least put it on paper trade for 3 months. If you are not able to put it and you are not going to replicate what the back test is, there are a lot of slippages, a lot of factors which will come into the play. Now we will put almost everything possible, how to make the strategy a little profitable kind of a thing. So what we are going to do is, what is our maximum drawdown is 7,500 rupees. We will double it. We'll make it 15,000 rupees. So 10 plus 15 makes 25,000. So whatever we'll calculate is, we will calculate on 25,000 rupees. We'll keep our drawdown with us first. So let's see, let's go and do it. So usually will increase the capital to 25,000, right? Yeah, 25,000. See, but in 1 year, it has taken somewhere around about 138 trades. We are only winning 46% of the time. Risk is this much. Your average profit is 1946, and the loss is half of it. So your max profit can go up till almost 11,500, while your max loss is close to number 2,300 rupees, which is reasonable. I personally feel so. It's reasonable. It is around about 50% we are getting it. So we are going to start testing it since the weekly options started in India. That is on 11th March 2019. We will not do it before that. So that's why many times in Tradetron, when you selected 2017 onwards till now, it gives you an erroneous results for 17-18, because it is that time only using the monthly option, not weekly options. So let's go and create it. It's very easy. Anybody can create it. It's very easy. I think the easiest, the platform which I found was. Now, backtest live. We are not doing it live. We are only going to backtest it. What is our start date? As I said, 2019, March 11th. And we'll do it till date is. What we want to name is option buying. New. We will just put it as U. So we are going to use single, and what we are going to do is group type is single. We are not using a pair. We are just using single. Nifty bank, and chart type is candlestick. We are not using Heiken-Ashi. We'll delete this thing is. Now what we are going to use is
we are going to add current candle. We are going to use time frame as 3 minutes. Save. We add another indicator, that is Bollinger Band. Murthy sir ka bada favorite tha. Again at 3 minutes. Save it. A very good momentum indicator, RSI. Again at 3 minutes. Save it. Pivot points, day frame, save it. We are only going to trade in what we call as in a call option. We are not going to buy a put option. We are only going to buy a call option. We are traditionally a bull. I'm not doing it for the put option. One can do with the reverse for whatever conditions we are going to put for a call option is. Entry when? Come here, click on this point is current candle close, that is the current close is above Bollinger Band में तीन होते हैं, upper, middle and lower. So we say upper Bollinger Band. Then we add another condition, that is add RSI relative strength index is above 70. Okay. Then we add another condition is pivot points. Okay, sorry, wait. Current close is above R1. So we are using all the possible conditions where we need to be very bullish. Now you all will agree, closure above the upper Bollinger Band, RSI more than 70, current close over R1. That means we are totally bullish. We are not doing anything which is in a bearish phase or any other phase. Now save this condition. Now when to exit is simple is current close is below middle Bollinger Band. So we don't want to take anything for the longer duration and save it. Now come down. Any issues till now anybody has? No, sir. No, sir. No, sir. No, it's very simple. Actually, that's why. Now this is we are going to do in a weekly option. And here future based strike index, we are not going to use this. We are going to use premium based. So what we are going to do is call option premium 400. We are going to buy. We are not going to put any stop loss, no profit taking. Wherever it goes is moment it comes below the middle Bollinger Band, it should exit the trade. It's an intraday strategy or positional, whichever way it can be. And maximum trades allowed per day, according to the Quantman, is approximately 10 trades a day. It's 10 trades a day. So we are buying a call option worth 400 rupees, one lot, at whenever our condition satisfies, that is, it closes above the upper Bollinger Band, RSI is more than 70, and the pivot, the candle closes above R1. So let's see how it comes out to be. I'm again checking the conditions. Let's run the, oh, sorry, 10. It will take around about 100 odd seconds to, anybody who can tell me what will be the profit like? Any guesses? 200%. Okay, good. 200% means for 25,000 rupees, we are looking at somewhere around about 5 lakh rupees. Sir, बहुत ज़्यादा हो नहीं हो गया? No, No, sir, 25,000. 25,000 will be only 2 times. You are looking at 50,000 for 2019 onwards till now. 2 less. Huh? 60%. 60%. Good.
10 times of investment, sir. You are close. You are close. You're close to that number figure. Sir, if you had run this strategy and if the brokerage is not there and the slippage is not part of, the profit would have been 3,96,597.50 on a capital deployed of 25,000 rupees. Very good, sir. So let's go and dissect it. How good is the strategy is in action? Winning probability is 50%. We are going to take around about 500 trades in over last 3 years, 3.5 years, or maybe 4 years approximately. Risk per trade is 1.46%. Drawdown is around about 15,000 rupees. So 10,000 plus 15 makes it 25,000 rupees. This is what I had said. Average profit is 2,643 rupees. And the loss is around about 1,100 rupees on an average side. Your maximum profit is whopping 32,000 rupees. With a maximum loss of only 5,000 rupees. 1:6 ka trade hai, sir. Losing streak is 8. Winning streak is 7. Reasonable. 50% mein itna hi hota, sir. Now come down to these months. January, February, we didn't do anything. March, we ended with 21,000. March 2019. 21,962. April was 2,000. Again 2,000 in May. Loss in June and July both. Nominal. Profit again. Big profit in September. Profit again loss. Profit loss. 15,000. Profit. See this month. The maximum loss month was 12,031 rupees. And in this year, this is the year most likely where you had COVID. This is the COVID. COVID was this. COVID also you had this good amount of money coming. Now let's go down and see what happened in 510 transaction. So let's go to the last page first. 11th March 2019, 921 was your first entry. You made a profit of 1,580 rupees. Same day at 11 o'clock, you had a second entry which went into a loss. 12th March, you had 1, 2, and 3 entries. But this is cumulative profit which is shown. And I will just like to ask you, did you see a red figure out here? So let's go back and keep on seeing your profit only multiplies. You have already crossed 1 lakh of rupees, 12th, 2.4 lakhs, 2.5 lakhs, 2.7 lakhs, 3 lakhs, 330, 350, 361. 361, and we come to the final page of 3,96,000 rupees. That is today. Today, it would have, if we would have deployed this strategy at 248, it would have exited and would have given you a profit of around 6,343. Mind you, you had a very big candle coming the other way also. You had a very big candle coming. Today is 30th, sorry, it was yesterday. Yesterday, it at 248, it would have taken a trade when the market ran like a mad horse. And it would have exited you somewhere around about with a profit of 6,300 rupees. Almost 60% of your capital was made yesterday itself. You can see the red figures in your own in the chart which is shown up in front of you. The reds are very small. So we are not worried about the reds.
So I will request all of you, kindly make the strategy and deploy it on paper trade. Deploy it on a paper trade in this whole thing. The best part about Quantman is they give you 50 credit points for every login you create. So everybody of us have a lot of emails. So make multiple accounts, keep on testing. So yesterday I ended up, any query still now? Any query still now? Because then I will go on to some other Saval, part. does it show the statistics of how many trades taken in a Is day? it free? Average or something? Sir, this is the statistics. It is showing approximately, it has even shown that there were 3 illiquid trades. So total is 510 transaction over last, let's say 9 to 12, 21, 33, 45 weeks. So let's calculate our per month return also. Anybody who is very good in maths can do it. 3,96,000 divided by 45 turns out to be somewhere around about 8,000 rupees per month. Brokerage and slippage is extra. So let's take it down to 7,000 rupees on a 10,000 rupees capital. I think so it delivers reasonable to all of us. It delivers. 25,000, sir, capital. Sir, for an option buying for 400, Okay, fine. Yeah. 400 into 25 is 10,000 rupees plus 15,000 rupees as slippages. So total capital required is 25. Keep a buffer of 5,000 more. We may be in one of the bad days where it takes the trade that way. So 25,000 rupees plus 5 more, let's say it is 30,000 we keep. ₹30,000 we keep it with us and we get 8,000 on it. So by brokerage and plus slippages, we say it is just 7,000 rupees profit. 7,000 into 4 is 28,000 rupees. In 4 months' time, your money is almost doubled. Sir, can you please show the entry condition again? Sir, I will definitely show. So take a screenshot of it. Sir, in instrument, we chose only 400 price, right? Right. Yes, sir. Instrument is call option of 400. Now, if we make it reverse of it, let's make it. I have not tried it. So we will make it because I don't think so. I have too much credit left now. I don't have too much credit left. सर ये वाले टेस्टिंग में हमने सिर्फ कॉल बाय किया ना हाँ, अब हम उल्टा करते हैं. मेरे पास देखो मेरे पास क्रेडिट कितने बचे हैं. Last 8 credits left. So let's create one more strategy. Just hold on a sec. Just hold on. So we are now going to go for a P option buying. We will use the same kind of things. So we'll have both the the parameters with us. So we make it on Bank Nifty, candle, we delete it. So we add an indicator one is current candle. Again, we'll use 3 minutes. So we are making the reverse of it also. We need an RSI, 3 minutes, save, add indicator, we will add Bollinger Band. Again 3 minutes, save it,
And we will add the fourth thing is pivot points daily, save. Field पे future price आता है तो it is considered bank nifty future, correct? It will consider it. Sir, we are going to ultimately not use the future price. No? We are going to use the 400 premium now. So we edit and says current. डालेंगे इसको हाँ जी. YouTube पे डालेंगे ना आप इसे? Yes sir, डालेंगे sir. आप ठीक Is below lower Bollinger Band. अब हम नीचे की तरफ exactly उल्टा कर रहे हैं. And relatives index is below 30. नहीं सर, पुट बाय कर रहे हैं तो बॉलिंजर बैंड अपर ही होना चाहिए ना. आप ऑप्शन का बॉलिंजर बैंड कर रहे हो. Okay. Right. It should be upper Bollinger Band 30 and nice. Thank you. And सर अपर क्यों लिया? हम तो फ्यूचर प्राइस पे तो लोअर पे आएंगे ना. लोअर में ही आएगा सर. चलो दोनों में कर लेंगे. We'll do it. अरे अपर ही आएगा, ऑप्शन बाय कर रहे हैं, पुट सर ऑप्शन इट्स बाय ऑप्शन बाइंग पुट ऑप्शन ये अपर ही आएगा. अपर. अरे लेकिन बॉलिंजर बैंड हम लोग फ्यूचर प्राइस पे ले रहे हैं, पुट के प्राइस पे नहीं ले रहे हैं. पुट के प्राइस पे ही है. नहीं फ्यूचर पे प्राइस पे ना. पुट प्राइस पे बाइंग उसके ऊपर क्रॉस का बाद में होगा ना. एक समझो सर, अभी हम ना दोनों में कर लेते हैं. एक समझो अभी करंट क्लोज is below S1. ठीक है, pivot point S1. Save. I'm just making. I have not seen it. मैंने ये कोई वीडियो नहीं इसके ऊपर देखा, तो मैंने ये जस्ट मैं बना रहा हूँ अभी आपके सामने. 400. There is no. We are going to only buy the option, and सर maximum we are going 400 to. is because it is 1% क्या? क्या सर? 400 is because you chose 400 because it is 1% of bank nifty. No sir, it is basically कुछ मिलेगा तो 400 पे movement is going to be very good ना. For Nifty I will choose 200. सर इसमें एटीएम वगैरह नहीं है क्या? एटीएम सर एटीएम भी है, आप एटीएम भी ले सकते हैं सर. इट्स योर चॉइस. मैंने एटीएम पे रिजल्ट कम आ रहा था सर, मैंने इसलिए ये किया. So we again do it from 11th March 2019. T option buying, candle Heiken-Ashi. We will see both the upper Bollinger Band and a lower Bollinger Band both. सर ये फ्यूचर प्राइस पे कैंडल है तो अपर का तो फ्यूचर है तो लोअर ही होना चाहिए. हाँ सर, क्योंकि हम ये बॉलिंजर बैंड ऑप्शन के प्राइस पे नहीं देख रहे, हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर के प्राइस पे देख रहे हैं. अच्छा, और हमने एग्जिट कंडीशन तो डाली नहीं. करंट क्लोज इज अबव द मिडल बॉलिंजर बैंड. हमने तो एग्जिट तो डाला ही नहीं, तो उसने तो गलती रीड कर लेता. बिलो मिडिल बॉलिंजर बैंड राइट. हाँ, इज अबव द मिडल बॉलिंजर बैंड. सर बिलो आएगा ना एग्जिट के लिए. अरे नहीं ना, कौन सर ये बराबर है, ये वाला एग्जिट बराबर है, एंट्री आपको चेंज करना है. एक समझो, इज अबव, और इसको चेंज कर देते हैं, इज अबव कर लेते हैं, इसको अबव करते हैं. इज अबव अपर बॉलिंजर बैंड. लेट्स सी इट व्हाट कम्स आउट. मेरे पास अभी इसमें है नहीं बहुत ज्यादा क्रेडिट, सो आई विल जस्ट डिक्रीज द टाइम टू, आई नीड इट एटलीस्ट फॉर मैं 2020 से 21 से कर देता हूँ 1 जनवरी से, so that I have credits to show to everybody. नहीं तो वो क्रेडिट 2 है ना, 8 ही रह गए. So let's run it. Let's see it what it comes out to be. सर इसमें कंफ्यूजन सिर्फ इतना है कि जो ट्रेड लेगा वो बैंक निफ्टी का चार्ट देख के लेगा या ऑप्शन का चार्ट देख के ट्रेड लेगा बस. सर एक फ्यूचर का चार्ट देख के लेगा. फ्यूचर सर ये तो फ्यूचर का चार्ट देख के लेगा, तो फिर तो लोअर हिसाब से लोअर. नहीं सर, एक सन बात सुने, पर लेगा तो पी का चार्ट देख के ना सर. नहीं ना सर, वहाँ लिखा है ना फ्यूचर प्राइस पे कैंडल रहेगा. चलो तो देखो सर, फ्यूचर में कोई पुट एंड कॉल नहीं होता ना सर. Let's see it sir, क्या आता है. Sir, I think it may still work out a bit because you are looking at a volatility breakout, though spot is moving in the opposite direction in this case.
सर हम जब वो चार्ट बना वो हम जब इंडिकेटर ऐड कर रहे थे ना वहां लिखा हुआ था फ्यूचर प्राइस। इसने क्या नो ऑर्डर्स मेड प्लीज चेक द कॉन्फ़िगरेशन एंड और कहीं पे गड़बड़ है सर। सर बॉलिंजर बैंड अगर अपर चूज कर रहे हैं तो आरएसआई अपने को 70 लेना होगा। राइट। सर आप फ्यूचर पे बनेगा सर, ये वो तो बाय कर रहा है सिर्फ ऑप्शन सर, वो तो काम कर रहा है सर फ्यूचर पे ना। सर आप कंडीशन में जाओगे ना वहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर प्राइस लिखा हुआ है, देखो आप फील्ड देखोगे ना, फील्ड फ्यूचर प्राइस है ये, तो हमको बॉलिंजर बैंड में बिलो बॉलिंजर बैंड लेना। नहीं सर ऊपर सर ये सर वो सही था ना, पहले इस बिलो 30 रखो एक बार, और वो ऊपर करंट क्लोज बिलो लोअर बॉलिंजर बैंड। सिर्फ बॉलिंजर बैंड ही चेंज होगा सर। हाँ सर उसमें क्रेडिट चला गया क्या आपका? अगर चला गया फ्री अकाउंट है यार, कोई क्रेडिट का क्या डर है। दो और ईमेल बनाओ और ये इसको उठा कर लगा दो। मुझे तो उसका कॉल ऑप्शन वाला तो बहुत अच्छा लगा, मैंने तो पेड अकाउंट इसका ले लिया, पर इसका पेड अकाउंट इज लिटिल एक्सपेंसिव। इसका पेड अकाउंट अराउंड 910 रुपीज पर मंथ पड़ता है, जबकि ट्रेडट्रॉन का हमें 350 के करीब 380 के करीब पड़ता है। सर इसमें प्रॉफिट शेयरिंग भी है क्या? क्योंकि सर प्रॉफिट शेयरिंग है। अभी तो ट्रेडट्रॉन सीखा था, जब ये नया आ गया सर, दोनों में से पता नहीं कैसे एडजस्ट होगा। उसका भी फीस पे कर दी थी मैंने तो। वो जो एडवांस स्ट्रैटेजी क्रिएशन करा रहे हैं वो, और ट्रेडट्रॉन का कह रहा हूँ सर, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो मैंने प्रीमियम ले लिया था उसके ऊपर आता है, वो आता रहता है कि आपको अगर ये कोर्स करना है तो यू कम एंड डू इट विद अस। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ मैंने ट्रेडट्रॉन ले लिया था, और आज फिर ये शायद कोई ना दूसरा सॉफ्टवेयर आप बता रहे हैं कुछ सास में, क्वांटम मैन का वो। ये देखो इसमें इसने 1.5 साल में इतना ही पैसा दिया हमें, 17,000 रुपए दिया। इसका मतलब हमारी पुट में कंडीशंस मजेदार नहीं है, बहुत सारे रेड मंथ्स हैं। लेट्स स्किप ऑल दीज रेड मंथ्स, देयर इज नॉट नो फन डूइंग सच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ स्ट्रैटेजी कल मैंने की थी। सर एनीबडी कैन रीड दिस प्रॉफिट? 1,39,31,31,000। 1 करोड़। यस सर। मैं अब आपको इसका सर यही दिखा ये नहीं ये ना, आप इसको देखो 32% है। एवरेज प्रॉफिट इज 13,90,871 रुपीज, और लॉस भी उतना है। तो मैंने इसमें सोचा मेरे से हो क्या गया गलती, तो मैंने इसको जाके चेक किया। बैंक निफ्टी डिफॉल्ट में फ्यूचर प्राइस है, ये मैंने स्टॉप लॉस 10% एंड ये 25% का मैंने वो लगा दिया, और एक्सपायरी मैंने मंथली ले ली। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस, मतलब कि आपको अपनी कंडीशन अगर आपने थोड़ी भी गलत लगा दी ना, मैं भी बड़ा हैरान था, मैं कि यार इतना पैसा थोड़ी हो सकता है एक ट्रेड में। सो आई वेंट एंड चेक द बैक टेस्टिंग, मैंने इसका रिजल्ट चेक किया। सो लेट्स गो एंड डू इट फॉर 20। पीछे लास्ट पेज जाते हैं। शुरू ही 11 लाख रुपए का नेगेटिव से हुआ। कैपिटल कितना है सर इसमें? कैपिटल कितना लगा है सर? वही आपका एक ऑप्शन बाइंग में कितना लग रहा है आपका मंथली में? 1000 का 25 से करो, 25-30 हजार रुपए लग रहा है। आप देखो आप यहां तक 25 लाख रुपए नेगेटिव हो चुके हो। अब लेट्स सी द अदर डेज। अब फर्स्ट टाइम ग्रीन यहां होते हो, मतलब इतने दिन में आप करीब 8,02,000 रुपए तक नेगेटिव हो, फिर आप अंदर 28 लाख तक पहुंचे हो, एंड सडनली यू मेक ए बिग प्रॉफिट, एंड देन आप ग्रीन में रहते हो सारा टाइम। अब आप बड़े बड़े ग्रीन्स में आ रहे हो। अब आपको ग्रीन से कोई मतलब नहीं है, अब आपको आप रेड से नहीं, आपको डर लगेगा, ये चाहे कितने बड़े बड़े भी रेड्स आ रहे हैं। So इसमें सर आप यू कैन यूज, आई हैव नॉट ट्राइड इट ऑन, एक्चुअली यू आर ओनली अलाउड 1 पेपर ट्रेड।
तो मैंने कल क्या किया था, आई हैव पुट वन ऑफ माय स्ट्रैटेजीज ऑन एक्चुअल ट्रेड. ये है एक्चुअल ट्रेड, दैट इज लाइव. इसके यहाँ पे लाइव आता है. दिस इज एन ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी and this I used it on sorry, this I used it that on super trend using 310 setting in super trend, 3 minutes candle and EMA 50, and if there is the current close is above the super trend and is above the exponential moving average, so that is where I'm going to take a trade, but I will close the trade if it comes below the super trend. And we are buying a option of 200 rupees call option. This is on a weekly chart. So today it gave me a loss of 1492 rupees. I'm going to see the strategy overall, how it runs over a period of 3 months before I will actually deploy it. Because sir, पैसा तो अपना है ना, you cannot have all these things. अब इसमें slippages भी पता लग जाएंगे, आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई इसमें क्या drawbacks भी होते हैं. So इसका मैंने टेस्ट किया हुआ है मेरे ख्याल, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी ये रहा. If I use this strategy from 11th March 2019 till 31st, ये वही वाली है ना? Yes, हाँ, same है. Same strategy. If I used it from 2019 till date, in 45 months, it would have given me 3 lakh rupees. Same strategy. And इसमें initial months में red बहुत है, but आप उसके बाद देखो greens ही greens आप पे चल रहे हैं सारे. और number of trades कितने हैं? We had only 940 trades, which is pretty high number. पीछे वाले में we had only 510 trades. तो अगर आप brokerage भी लगा लो सर, तो 510 अपनी brokerage उतना तो minus कर ही लेना आपको. We had 33 illiquid trades, तो मतलब वो हुए ही नहीं होंगे, errors आगे होंगी. So हम last page तक देखें सर. We had a profitable, we started on a profitable note and we continued to be on a profitable note throughout this thing is. The star means this was illiquid trade. So there was zero profit into it. So they are not calculating it. So we had a lot of like this. Sir, I have a question. So is that a number of trading days or a number of entries that took over the period? Sir, it is 10 trades per day maximum limit. So you may have 10. You had 7th June, you had 2 entries. No? One gave you loss, other gave you a profit. So 3rd June, both the entries gave you a profit. No, a few seconds back, you showed that 950 trades, right? I'm asking whether it is a number of trades. Okay, number transactions, sir, 940 trades. Yes, sir. These are 94 pages. Each page is showing 10 results. Okay. So it comes out to be 940 only, sir. Okay. So we come down. You see, you still had some profitable days. You can keep on carrying on, checking it out. See, by now it is only October 2019. 7 months after you started your strategy, this is exactly 11th October. Your capital is double if it runs this way. So let's go and see. So exactly after 1 year, what was our situation is, that is 11th March ending. It was 46,370. Minded, we had a lot of negative months in 2019. 1, 2, 3, 4 negative months. इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं हो सकता कि मार्च 2020 के बाद कोरोना जब हुआ उसके बाद मार्केट तो अप ही जा रहा है. That's the reason we are seeing some good results after 2020. सर एक बात बताओ सच्ची, दिल पे हाथ रख के बताना, ये जो अभी पीछे 5 दिन मार्केट गिरी थी तो क्या डर था आपको? Trust me, everybody was thinking about selling. मार्केट में करेक्शन आ रही है, आप बेच दो. सर मार्केट में हमने बड़ा कुछ देखा, रशियन वॉर भी देखा हम लोगों ने अभी.
अभी यूक्रेन का भी हुआ है, nobody could have predicted ये 300 पॉइंट्स की कैसे कैंडल एकदम बन गई बड़ी सारी। Nobody could have said ना, आज 5 मिनट में 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है सीधा ही। मतलब मेरा तो उस टाइम मन कर रहा था कि मैंने गलती की कि मैंने कॉल एंड पुट दोनों बाय करके रख लो, एक दोनों का 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो, तो एक तरफ तो आपको बहुत मेजर गेन मिलना था, ऐसे एक दिन में बहुत मेजर गेन मिलता है। अब आप सर ये देखते हैं, अभी हम इसको लेके जाते हैं 2 साल के बाद हमारा कितना प्रॉफिट था, एग्जैक्टली आफ्टर 2 months, 2 years. This is 10th of March. After 2 years, our capital would have been 1,66,515 rupees. अब 3rd ईयर पे आ जाते हैं, 2022 में क्या होता है। इलेवेंथ मार्च को आपकी कैपिटल 2,83,000 हो चुकी है। So your 35 or 40,000 rupees, whatever you're thinking is your put is 2,83,000 rupees. And December में आपकी अब ये कैपिटल 2,95,000 rupees हो गई। सर ये क्वांटमैन वाला जो है हमारा, we need to all work it out and make multiple strategies. These are very easy to make it. And so क्वांटमैन वाला जो एक सॉफ्टवेयर है, ये हम लोग को अब सबको we need to work it on this one is everybody should try to make a strategies on it and put it on paper trade. You can maximum put one per email ID. So put it on paper trade and do it. They have a very limited number of APIs connecting brokers. बहुत ज्यादा नहीं है, 8-9 है, जैसे कि in TradeTron we have around about 40 odd or maybe plus 40 plus. Here we don't have much. We have Zerodha, we have Angel, Alice Blue, Fires, we have ICICI, and we had there are a few more. So we don't have more than 10 or 15. So इसको सर आप प्लीज अपने उसमें करें। मैं अब आपको अपना दूसरा अकाउंट दिखा देता हूं, मैंने जिसमें यही मैंने स्ट्रैटेजी को आज अपना लो जी। I backtested this. I have done my broker integration with this, and my strategies. I have put this Bollinger Band. I created in today evening, and I put it on a paper trade for this. So इसको सर ऐसे इसको लगा के रखो, so that you are able to know whether these things work or don't work, because many things हमें स्टॉक मॉक पे बहुत अच्छा मिला रिजल्ट, बट जब हमने एक्चुअल में डिप्लॉय किया तो हमें फायदा नहीं हुआ। और तो जो मर्जी आप कर लो, विक्स वाला एक फैक्टर है जो कोई भी नहीं इसको कर सकता। तो अगर विक्स ज्यादा है, तो अगर हमारे साइड में है, कॉल साइड में, तो हमें बहुत फायदा होगा उसका। So ये आपकी स्ट्रैटेजी ने आपको 3,02,000 रुपीज दिए, दूसरी वाले आपने को 2,98,000 दिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों है 1 जनवरी 2020 से लेके 29 दिसंबर 2022 तक। So इसमें जब आप प्लान बाय करते हो, आजकल में जो है, आई डोंट नॉट रिकमेंडिंग बाय अ प्लान में, बिल्ड मंथली कर लो और एनुअली। इसमें ना आजकल अभी एक ऑफर चल रही थी, आज पता नहीं बंद हो गई है, दैट इज हैप्पी न्यू ईयर, उसमें 30% ऑफ दे रहे थे, ये फिर बढ़ गया आपका। हाँ, ये कल इसका रेट वाज 910 रुपीज।
Today it is 1300 rupees. It's expensive as compared to what we had it. Plus GST also 18%. नहीं, this is plus GST, so around 1500 rupees आएगा. You have 250 backtest credits. Actually, आपको backtest credits are the most important thing. Yes. आपको 250, आपको ट्रेड ट्रॉन में एक क्रेडिट 20 रुपीस का पड़ता है प्लस जीएसटी, समवेयर अराउंड 23.5 रुपीस का पड़ता है. मैंने पीछे खरीदा. Yes, yes. तो 23.5 के हिसाब से अगर आप उसको 250 को मल्टीप्लाई करो तो 6000 के क्रेडिट्स हमें दे रहे हैं अलग से. This is little expensive. I'm not saying this is little expensive as compared to trade tron. और अगर आप यूजर फ्रेंडली कौन सा है सर दोनों में से? या दोनों उतने ही हैं. मैं आपको एक सीधी बात बता रहा हूँ, दोनों सेम है. ट्रेड ट्रॉन में आपको थोड़ी सी कोडिंग आनी चाहिए. जी जी, यस यस, आपको कोडिंग आनी चाहिए. अब जैसे मेरे जैसों को तो पता है कि कैसे कर लेते तो मैं कर लेता हूँ. अच्छा, वो सर मैं करके देखी थी, वो ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस वाली बात है. हाँ, वो जिनको तो देखो, those who are from the engineering or the computer field, they will not have any issues. और जो मेडिकल फील्ड में होते हैं उनको जरूर कोई इशू होता है. Yes sir. अच्छा, I'm just stopping the recording.